Bhai, our mutual friend Nawaz Modi Singhania, she sent me a book. जी And she said, Rishi, whatever you do, जी you don't need to read it at one stretch. Right. Thoda thoda karke pad le, because it's something that will really affect you. It really moved me. जी thank you. People must be coming now and telling you about that book of yours. Right. Talk to me about the book, why you decided to do it. इट वॉज एन एक्सपीरियंस. मेरे मदर हमेशा क्या करते थे, जो भी ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट चीज़ हो लिख लिया कर, भूल जाएगा नहीं तो. मैं बोलता यार हाँ मामा कोई बात नहीं बोलते. एंड आफ्टर शी लेफ्ट अस, मैं उनकी डायरी देखता था, उसमें हर चीज़ें लिखी होती थी. माई सन टुक मी टू गोवा, आज हम बोट पे बैठे हैं, बड़ा स्पेशल है, डेट तारीख टाइम के हिसाब से लिखते थे. व्हेन आई वेंट थ्रू दोज नोट्स आई फेल्ट दैट शी इज़ अराउंड मी. फिर मैंने लिखना शुरू किया कि यार हुआ. और जब मैं इतने लोगों से मिला, इट केम टू माई माइंड कि माई मॉम वुड डेफिनेटली आस्क मी टू राइट ऑल दोज एक्सपीरियंस. जब आप एक अनजान इंसान से बात करते हो, उसको जानते नहीं हो, बट यू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ, सो दैट एक्सपीरियंस हैड टू बी शेयर्ड विद पीपल. So that's why someone suggested कि आप ये experiences ज़रूर लेकर आओ, and I try to do that. So wonderful to see you. Man, honest player, bhai. Thank you so much. Bhai, I believe you're taking the samosa wala from Moga to South Africa. Did that happen finally? It finally happened यार. मैं I remember कि जब मैं मोगा में था, एक ऐसे ही चल रहा था तो स्टॉल देखा, वहीं रुक गया, वहीं इनका फटाफट प्रोमो मैंने खुद ही बनाया, खुद ही शूट किया और वहाँ बोल दिया कि समोसास मैं साउथ अफ्रीका लेके आ रहा हूँ. जब मैं वहाँ पे गया मैंने वादा निभाया बॉस, साउथ अफ्रीका में लेके. I saw you distributing it to everybody. Yeah. And like they say in Punjabi, ठंड पै गई. They must have thought कि बेचारे कहाँ वहाँ पे वेस्टर्न खाना खा रहे हैं, à la carte ये वो, and suddenly Sonu has given them samosas. Proper samosa with पुदीने की चटनी. But tell me, the perception is that you eat healthy. जी. You have just proved that samosa can be healthy if eaten in small quantities. Of course it can be यार. समोसा खाओ, एक्स्ट्रा आधा घंटा वर्कआउट करो, चलता है, then it's healthy. Lovely. The adventure aspect must have really appealed to you as far as Roadies is concerned. Yeah. And talk about that. Did you take time to say yes, or was it an immediate yes when MTV and Woot said let's do it? No, it was an immediate one, but of course I wanted to explore कि दुनिया क्या है, कि मेरे साथ मैं fit कैसे होता हूँ उसके अंदर. So I think when we had a few discussions, I knew that ये वो space है जहाँ पर I'll be able to connect with people, और that's what happened. और look, we are 45 days in South Africa, from one corner of the country to the other, on road, so it was magical. They say there's the Kruger National Park, where there's a game reserve and they have a lot of camps there. Did you set up in any camp, or were you just traveling throughout? We were traveling throughout. हमने Port Elizabeth से शुरू किया था, then a lot of places, Sisikama, Naisna, George, and में Cape Town में हम लोग पहुँचे. So we covered the whole thing, the Golden Route, everything. I mean, I'm sure it's going to be a treat for the audience when they watch Roadies this time. They say Cape Town is a party capital. Did you manage to go out to party? I know you're not a party animal. Not at all. Drink, but sometimes you can go and dance. I know, but I need to find a partner for that. यार next time आपको ले चलूँगा, but we were shooting till late nights, 2-3 बजे पैकअप होता था. But the whole experience was phenomenal because मुझे कभी महसूस होता था कि शायद मैं contestant हूँ, कभी महसूस होता था कभी आप mentor हैं, कभी आपको लगता था कभी आप judge हैं. So a lot of emotions when you be with all these contestants and you go through their journey, and it's very special. On the set we party actually. And Roadies is considered to be physical tasks, but you would agree that it has a lot to do with the mind. Yeah. So talk about that. You always talk about mental health and mental positivity. Of course, when the best part of Roadies this time was, it was a buddy pair. They used to call buddy pair. It's like an ex-roadie and a new roadie. जब आप दो लोगों को साथ में रख देते हो, sometimes you don't gel with an individual, but you have to perform a task together. And if you don't perform well, you will be out. So आपको उस स्पेस में कंफर्टेबल होना है. इट्स नॉट कि आप किस स्पेस में कंफर्टेबल हो, आपको जो स्पेस दिया हुआ है उसको आपको अपना स्पेस बनाना है, एंड यू हैव टू डिलीवर द बेस्ट. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट. दे एक्सप्लोर्ड कैंपिंग इन डिफरेंट लोकेशंस, मुश्किल जगहों पे, टफ टेरेन्स में, एंड देन अगेन गोइंग थ्रू ऑल दैट डिफिकल्ट फेसेस ऑफ द जर्नी, but you have to be the best to survive. So I think that's what Roadies is all about. In a way, they took you back to your roots because the promos also shot in Moga. Ji. Must have felt as though Mummy Papa must have been around somewhere. So, yeah, of course. I think they made that happen, and I'm sure they must be feeling proud जो भी मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी में. And yes, the connection, I always miss that connection, and that connection keeps me going. And I love the fact that you're still running through the khet when somebody's following you. Yeah. These are the khets of your childhood? Yeah, they are the khets of my childhood, and
जब भी वहाँ पर जाते हैं तो फील होता है कि you're back to your roots, and that's a place you connect the most. I was asking somebody at MTV right now, what is the difference in Sonu Sood's anchoring and any other anchor you've had in 17 years? Yeah. There's a calmness. जी. एक स्थिरता है, एक calmness है. Were you always like this, bhai? Or in your earlier days, in teenage, we all have certain angst. जी. Did you have a little bit of that angst in you? Has life made you like this, bhai? I think भाई when I was doing my engineering उस समय नागपुर. थोड़ा था नागपुर में थोड़े कॉलेज वाले थे. I was in that बिहारी ग्रुप जो झगड़े वगड़े करते हैं, बट आई वॉज ऑलवेज द पीस मेकर कि झगड़े हो गए नहीं बेटा, झगड़े नहीं करने, साथ में चलना है. सो आई ऑलवेज यूज टू प्ले दैट रोल, बट येस आई वॉज ऑलवेज लिटिल काम, और जो वापस लेकर आता था कि बॉस नहीं ऐसा नहीं करना. और जब रोडी शुरू भी हुआ, व्हेन आई सॉ ऑल द कंटेस्टेंट्स बिहेविंग जैसे भी वो करते, जो भी उनका पर्सनैलिटी रहता होगा या जो भी मेंटल फेज से गुजरते होंगे, सो आई ऑलवेज यूज टू लिसन टू देम. और मैं कहता था यार ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. एंड आई बिलीव कि जब मैं पूरी जर्नी ख़त्म हुई, सो आई कुड सी दैट चेंज इन देम. एंड आप विश्वास करेंगे व्हेन यू सी दोज एपिसोड्स, एंड और वो कंटेस्टेंट्स खुद भी वो बात करते हैं कि वी आर डिफरेंट इंडिविजुअल, आपसे इतना टाइम स्पेंड करके, और हमें लगा कि लाइफ में अभी अलग तरीके से जीना है. एंड आई थिंक इवन इफ यू आर एबल टू चेंज वन लाइफ इन द एंटायर जर्नी, इट्स वर्थ. Bhai, when you and me were growing up, we grew up in a very different India. I find the kids are smarter than us. Right. I mean, I'm sure when you look at your son, when you Right. look at your children, I look at my daughters, I feel they are smarter than us. And you're dealing with that Gen Z now. जी. What did you feel the difference in this youth compared to the youth of our childhood? This is more technology friendly, they're growing in the technology. हर चीज़ उनको पता चलती. हमें ढूंढनी पड़ती थी ये चीज़ बनाते हैं जो नई जनरेशन है. आज भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कोई टेक्नोलॉजी में आए, तो आप अपने बेटे के पास जाएंगे, फटाफट 1 मिनट में ठीक करके दे देंगे. एंड यू वंडर कि यार कहाँ हम लोग पीछे रह गए हैं कि ये बहुत आगे निकल गए. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन कमिंग ईयर्स. जो जिसको सब पता है उसी के बारे में सबको पता है. Why did Raftar, did Ayushmann, did Rannvijay, any of them message you because they have so much love for you? Yeah. About you taking on Roadies. Right. मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी. इनफैक्ट आई मेट रणविजय एंड रफ्तार रिसेंटली एट एन इवेंट, एंड इट वाज वेरी स्पेशल. और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके. एंड दे वर वेरी हैप्पी कि सेड यार सोनू यार तू कर रहा है ना तो अच्छा ही कर रहा है. सो आई थिंक एक बॉन्डिंग है. मुझे लगता है कई चीज़ें, कई रिश्ते, कई बॉन्ड जो होते हैं वो काम, निजी काम से, शो से बहुत ऊपर होते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट आई शेयर विद ऑल ऑफ देम. Bhai, I love the fact that an airline had a wonderful tribute to you, and there was a picture of you and things said. That must have been a very emotional moment to you because ऐसा कोई कम से कम प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के लिए भी नहीं करता. And did it make you more humble in some ways? Sometimes life makes you even more humble. I would say every day things I experience makes me realize that God's been kind. कहीं ना कहीं कुछ फोर्स है जो गाइड कर रही है और बता रही है कि टिके रहो, थमे रहो. एंड व्हेन आई सॉ दोज इमेजेस, आई मिस माई मॉम एंड डैड द मोस्ट. आई थॉट विश आज तो यार इनको होना चाहिए था देखने के लिए. बट देन आई थॉट कि शायद वही है, सब कर रहे हैं. एंड आई नो दैट दे आर मेकिंग एवरीथिंग हैपन. बट येस, आई फील हम्बल्ड, आई फील ब्लेस्ड, एंड समवेयर जो लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ उनकी दुआएं काम कर रही हैं. Bhai, Milind Soman, when he was taking part in Khatron Ke Khiladi, told me one very important thing. He said, I'm a swimmer, I'm a sportsman, but to do adventure and to do stunts and to do long distance stuff, more than a physically fit body, you need some kind of jigra of risk taking. Right. Do you agree with that? Of course, yes. मैं कहता हूँ कि जो आप टीवी पे देखते हैं और जो रियल में होता है, दो अलग चीज़ें होती. आई रिमेंबर वहाँ पे बंजी जंपिंग का टास्क था, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, वहाँ से जंप किया था. और इट वॉज 216 मीटर्स, एंड व्हेन यू आर टाइड, आपके पैर बांध दिया होता है, आपको जंप करना है. सो आई मीन यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट थिंग. मैंने भी किया. इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई टास्क, बट आई वॉन्टेड टू डू दैट. आई थिंक दैट्स व्हाट रोडीज इज ऑल अबाउट. यू हैव टू ओवरकम योर फेयर्स, यू हैव टू accept the challenge, and you have to go all out. Bhai, what I also love about you is the behind the scenes crew. You give them so much respect. I saw you with a South African guy just goofing around, making him do dialogues. He was doing some dialogues and things like that. And in a show like this, the behind the scenes guys are very important because your life is in their hands. You want to say something about the South African crew or people from the other parts of the world? They were very sweet. I used to spend maximum time with them only off the camera. I used to sit with them.
खाना वाना हम लोग साथ में खाते थे, कुछ डायलॉग्स वायलॉग्स एक्सप्लोर करते रहते. तो आई थिंक दे आर द वंस हु मेक यू लुक व्हाट यू आर on screen. So and if you make them feel special, the kind of memories that you leave with them stays with them forever. बड़ी मुश्किल से सेट पे पूरा प्रोडक्शन वैल्यू से सेट करते हैं. I mean they are the most hardworking people on the set, and I think they are our real heroes, and we should make them feel special. Bhai, our mutual friend Nawaz Modi Singhania, she sent me a book. जी. And she said, Rishi, whatever you do, जी. you don't need to read it at one stretch. Right. थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ले, because it's something that will really affect you. It really moved me. जी, thank you. People must be coming now and telling you about that book of yours. Right. Talk to me about the book, why you decided to do it. भाई इट वॉज एन एक्सपीरियंस. मेरे मदर हमेशा क्या करते थे, जो भी ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट चीज़ हो लिख लिया कर, भूल जाएगा नहीं तो. मैं बोलता यार हाँ मामा कोई बात नहीं बोलते. एंड आफ्टर शी लेफ्ट अस, मैं उनकी डायरी देखता था, उसमें हर चीज़ें लिखी होती थी. माई सन टुक मी टू गोवा, आज हम बोट पे बैठे हैं, बड़ा स्पेशल है, डेट तारीख टाइम के हिसाब से लिखते थे. व्हेन आई वेंट थ्रू दोज नोट्स आई फेल्ट दैट शी इज़ अराउंड मी. फिर मैंने लिखना शुरू किया कि यार हुआ. और जब मैं इतने लोगों से मिला, इट केम टू माई माइंड कि माई मॉम वुड डेफिनेटली आस्क मी टू राइट ऑल दोस एक्सपीरियंस. जब आप एक अनजान इंसान से बात करते हो, उसको जानते नहीं हो, बट यू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ, सो दैट एक्सपीरियंस हैड टू बी शेयर्ड विद पीपल. So that's why someone suggested कि आप ये experiences ज़रूर लेकर आओ, and I try to do that. What do you feel when people are doing an aarti in front of your photo? You must be trying to stop them sometimes. I do क्या that. कर रहा है यार तू? मैं बड़ा मना करता हूँ उनको. और अभी भी मैं जब कई बार साउथ जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, I see them doing that. मैं बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको बोलता हूँ कि ऐसा मत करें. I know I don't deserve that, but that's their way of showing love, और I hope कि वो समझ जाए. Beautiful. भाई, this show is coming on Voot as well as MTV. जी. जो OTT वाले हैं वो बोलते हैं अरे यार मेन स्ट्रीम टीवी, बट मेन स्ट्रीम टीवी का saying boss, people are watching Indian Idol, people are watching Big Boss, KBC is going through the roof. Right. What do you feel about this? कि आपका दोनों में आ रहा है, so you have a good perspective. Yeah, I think it's very important. और ऑडियंस जो है ना वो चेंज हो चुकी है. OTT का ऐसा एक्सपोजर है कि हर बंदे को पता है कि कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी अच्छी नहीं. यू हैव टू बी द बेस्ट. आप एवरेज स्टफ नहीं लेके आ सकते. और इट्स गुड कि आज इतने प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट चीज़ों पर आती हैं. सो दैट गिव्स यू मोर ऑफ अ रीज़न टू बी द बेस्ट. You can't be a dealer on that front कि यार चलो कर लेंगे. You have to be on your toes and you have to give your best. Any of the bachas, we are going to play this after the press conference is over. Any of the bachas that you think were very very talented? I know it's a little difficult in the roadies. I know it's a little difficult. सब लोग सब थे. बड़ी और कमाल की बेस्ट बात थी, सब अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं. And regions की बात की. Religion की बात करें, पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, उनके बात करने के तरीके अलग हैं, देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं. And they all have a different vibe. And that's very special about them. और हर बंदा जो आता है कुछ ना कुछ एपिसोड में कुछ ऐसा करके जाता है that makes him a hero of that particular episode. So I think that's the best part. Do you like to drive yourself? I ride a lot. A motorcycle? Motorcycle, car, both. Yeah, but जो भी मिल जाए, जो भी दे दें. And are we going to see that here? Yeah. Throughout the series? Yeah. Huh? You'll see Are you doing some off-roading and going off and नहीं, things off like नहीं, that? बड़ा सिंपल सेफ. सब रोडीज़ के लिए बड़ा एक रूल्स है कि उतने उससे ज़्यादा तेज़ नहीं भागना. आगे सेफ्टी कार्स होती थी, पीछे होती थी, ताकि उनकी जर्नी स्मूथ और सेफ हो. Did you enjoy any winner in the past जिसको आपने देखेगा कि कितने अच्छे अच्छे बंदे थे? प्रिंस था, आयुष्मान himself won. आई थिंक सब लोग अच्छे थे. और बेस्ट पार्ट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे विनर्स ही हैं यार. अपनी उनकी जर्नी है. कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, एंड they are going to become popular. they are going to do well in their life. कोई एक्टर बन जाएंगे, कोई एंकर बन जाएंगे, कोई इन्फ्लुएंसर्स हो जाएंगे. So I just wish them all the best, and I want all of them to do well. भाई 8 तारीख को 8th May is Mother's Day. Oh wow. My last question is your thoughts on your mom and the mothers of the world. I would just like to say that there can't be one day which can be celebrated as Mother's Day. All 365 days, all our life, we should celebrate Mother's Day, because mothers are very special. जिनकी नहीं होती उनको पता है कि उनकी क्या कीमत होती है. बट वही होता है कि माँ ने तो हमेशा आपका ध्यान रखना है. कभी ज़मीन पर बैठ कर रखना है, कभी आसमान में बैठ कर रखना है. मेरी वाली आसमान पर बैठ कर ध्यान रखती है. बट आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन, गो एंड टेल योर मॉम दैट यू लव हर. मौका मिला है बोलने का, बोल देना चाहिए. कई बार जब आप बोलना चाहते हैं, कई बार नहीं मिलता मौका. सो आई जस्ट वांट कि सबकी माएँ जो हैं उनको बहुत लंबी उम्र दें, और हमेशा उनकी दुआएं बनी रहें सबके साथ. Would you rather watch Sonu Sood the actor or the anchor?
you'll watch both, but Yeah. थोड़ा ज़्यादा एक्टर कि थोड़ा ज़्यादा एंकर? अभी मैं एंकर अब देखना चाहूँगा कि मैंने करके क्या आया हूँ, कैसे कनेक्ट किया हूँ, बट आई थिंक या एज एन एक्टर तो कर ही रहे हैं, इतने साल से देख ही रहे हैं. I love you, bro. Thank Lots you of so love. much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.